Yum. So now done. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Aggarwal, and in case you are new here, then I make videos on makeup, fashion, lifestyle and vlogs. And welcome to another video of 30-day challenge. In case you don't know what this challenge is, तो मैंने अभी ये challenge ले रखा है जिसमें I am uploading every single day on YouTube for 30 days. So आज I guess 15th day है. So yeah, we have completed 15th day. And this video is special because you guys must be wondering कि मैं किचन में क्यों खड़ी हूँ. It's because I am trying viral TikTok food recipes or you can say food hacks. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, लाइक ट्राइंग वायरल फूड हैक्स फ्रॉम टिकटॉक, फ्रॉम इंस्टाग्राम. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ शॉट. एंड मैंने कुछ रेसिपीज़ निकाली हुई हैं, तो देखते हैं कि कैसी बनेंगी. जो रेसिपीज़ हैं काफ़ी क्विक वाली होती हैं कि 1 मिनट में बन गई, 2 मिनट में बन गई, ऐसी वाली रेसिपीज़ हैं. तो आई डोंट नो कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, अच्छी होंगी खाने में नहीं होंगी. तो ये सब चीज़ें आपको ना ट्राई करनी पड़े, इसीलिए मैं कर रही हूँ. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ. एंड अगर कुछ इसमें से कुछ अच्छा होगा हम एंड में देखेंगे, तो डू ट्राई दैट. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन ताकि मैं मिस माई वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट रेसिपी जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है एक ब्राउनी. एंड आई नो 1 मिनट में ब्राउनी थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, बट जब मैंने रिज़ल्ट देखे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट थे. तो चलो शुरू करते हैं. एंड मैं ब्राउनी बनाती हूँ. सो आपको ब्राउनी बनाने के लिए पहले तो ऐसा कुछ बोल चाहिए जो आप ओवन में रख सको, क्योंकि ऑब्वियसली ओवन में ही बनेगी. एंड उसके बाद आपको कोको पाउडर चाहिए 1 स्पून. आई एम जस्ट एडिंग इतना क्योंकि मुझे कम ही बनानी है क्वांटिटी, बिकॉज हम अभी टेस्ट ही करने हैं. तो ये 1.5 टेबलस्पून ऑफ शुगर, पाउडर शुगर ले लो आप. मैंने ऑलरेडी क्रश कर रखी है तो मैं ले रही हूँ. और ऑलमोस्ट फिनिश हो गई. नेक्स्ट ले लेंगे और करनी पड़ेगी क्रश. Now we have to take 2 tablespoons of maida. And now we have to add 1 tablespoon of water. So let me just drink water. Now we have to add 1 tablespoon of flavorless oil, जो basically vegetable oil होता है. तो मैं वही डालने वाली हूँ 1 tablespoon. Add a pinch of salt. Now we have to add a pinch of vanilla essence. बहुत थोड़ा डालना है. I just love vanilla essence की smell. तो मैं ढक्कन से भी डाल लूँगी नॉर्मल. And now we just have to mix it. इसमें तो बस अभी कोको पाउडर की खुशबू आ रही है और कुछ तो कुछ पता ही नहीं चले. इसके बाद आप एडिशनल इंग्रेडिएंट डाल सकते हो चॉकलेट चिप्स, बट अभी मुझे चॉकलेट चिप्स नहीं मिली. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं डेयरी मिल्क है मैं इसको कट करके उसमें डालूँगी. आई डोंट नो कैसा आएगा फ्लेवर, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, सो व्हाई नॉट डू इट. मैंने ये इतना पीस है ये डाल दिया है अपना इसमें. अब बस हमें इसे माइक्रोवेव में डालना है. नहीं तो इस फोन पे ही चिपक गया. तो ऐसा भी एकदम ऐसा लग रहा है दिखने में. अब मैं इसे माइक्रोवेव में रख रही हूँ. नाउ वी हैव टू माइक्रोवेव इट फॉर लाइक 1 मिनट. सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप कि कुछ अच्छा बन के आए. अच्छा बन के आया तो ड्रेस में मैं इतना खाने वाली हूँ.
गाइस अब ये पूरा बन गया है। आई एम जस्ट ओपनिंग इट। This is how it's looking. टेक्सचर तो बिल्कुल अलग आया है, मतलब बिल्कुल ब्राउन तो कहीं से भी नहीं लग रही है। I'll just do taste test and देखते हैं कि क्या है कैसा है। बहुत ज़्यादा कड़वा है। आई डोंट नो, मे बी कोको पाउडर की वजह से बहुत ज़्यादा कड़वा है। आधे मिनट के लिए और माइक्रोवेव करके देखती हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनकी वीडियोस में तो काफ़ी अच्छा सा वो दिखाया था उन्होंने। डिसअपॉइंटेड, वेरी मच डिसअपॉइंटेड। So I'm just throwing it. अब हमारी मैगी बनाई थी तो उसका आटे पड़ा है, तो नौकी लगा के रख लेंगे, वरना तो फटाफट बन जाएगी। गाइस नेक्स्ट रेसिपी जो मुझे ट्राई करनी है वो है मग केक। ये आजकल इतना चल रहा है, बट वी विल नॉट ट्राई मग केक, वी विल ट्राई मग पिज़्ज़ा। हम थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन करके वी विल डू दैट। एंड मग केक वैसे मैंने एक बार मैंने ट्राई करा था, बहुत बेकार लगा था, सो आई एम नॉट ट्राइंग इट अगेन। तो हम मग पिज़्ज़ा बनाते हैं एंड इट फोक कि वो इसकी तरह ब्लेंडर ना हो, तो बनाते हैं। गाइस इसके टॉपिंग के लिए आपको कुछ चाहिए होगा, तो आई एम टेकिंग 1 अनियन, 1 का उसका भी आधा कर लूँगी। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो इसे मग में, बट आई डोंट लाइक इट दैट वे, मुझे फ्राई करके डालना पसंद है, तो मैं बस इसे 2 मिनट के लिए सॉटे कर दूँगी और उसके बाद हम लोग इसे मग में डालेंगे। सो गाइस वी नीड अ मग फॉर दिस एंड यू हैव टू ऐड 3 tablespoons of flour, now you have a pinch of baking soda and a pinch of salt. So we are adding it. So I'm just adding this now and a pinch of salt. Okay, now we need 2 spoons of milk. एक तो मैंने स्पून इतनी ज़्यादा गंदी कर दी ना। So just adding 1 spoon. 2 spoons of milk. And थोड़ा सा ऑयल, तो just adding, सारा तो नहीं लूँगा, and you just have to mix all of this. आवाज़ अच्छी लग रही है। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद ऑयल कम डाला है, क्योंकि ये तो वीडियो की तरह डोगी शेक में आएगा, या फिर आई हैव टू ऐड वाटर ऐड करके देखती हूँ कि क्या होगा। नाउ इट्स बेटर। अभी थोड़ा डो की तरह लग रहा है, यू विल सी द कंसिस्टेंसी पूरी बना लग गया, मुझे थोड़ी थिक हो गई है। बहुत ज़्यादा थिक हो गया, थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। तो ये ऐसा है एंड अब हम इसे एकदम स्प्रेड कर देंगे नीचे। बेसिकली जो पिज़्ज़ा का बेस होता है ये वो होगा नहीं, वो है, ठीक वही है। रेडी कर दिया और ये ऐसा लग रहा है कुछ। एंड इसके ऊपर हमें पूरे में पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। आई एम यूजिंग दिस वन, ये वीवा की है।
मैं पूरी फुल स्पून लेकर इस पर स्प्रेड कर दूँगी। So this is how it's looking now. So इसके बाद we just grate cheese के ऊपर and I'm using this अमूल का जो मोज़रेला वाला चीज़ होता है ना, ये लाइक इसका आपने बात आई होगी नहीं आई होगी, अदरवाइज आई हैव टू डू अ वॉइस ओवर अगर नहीं आई होगी तो अब मैं इसके ऊपर बस चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ लग रहा है चीज़ ग्रेट करके, इसके ऊपर आप कुछ भी टॉपिंग्स डाल सकते हो, मैं बस अनियन डालूंगी। सो मैंने अभी अनियन भी डाल दी है इसके ऊपर। नाउ वी विल ग्रेट सम मोर चीज़ क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ चाहिए। तो अभी मैंने इसके ऊपर दोबारा चीज़ डाल दी एंड नाउ इसके अंदर भी आपको इसके ऊपर सीजन डाल इसके ऊपर आपको ऑरिगेनो ये सब डालना है। तो ऐसा लग रहा है एंड अब हम इसे ओवन में रखते हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआं वगैरह आ रहा था तो मैंने अभी ये बंद कर दिया एंड लेट्स जस्ट सी। 9 सेकंड बचे हुए हैं बट आई एम गोइंग टू ओपन इट। ओके नाइस, थोड़ा मेल्ट तो हो गया ये। सो लेट्स जस्ट सो आई एम गोइंग टू ईट नाउ। अमेजिंग गाइस, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके। ये सच्ची में एकदम पिज़्ज़ा की तरह लग रहा है, बस जो डो है इसका थोड़ा सा टाइट लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा माइक्रोवेव करना चाहिए था बट मेरे को बहुत डर लग गया, इससे तो धुआं आया था, बट अदरवाइज इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमको टेस्ट भी कराना था ये, बट you need to try this recipe guys, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब I'll give this recipe 8 out of 10। इसमें जो सॉस का फ्लेवर है एंड इसमें और ज़्यादा टॉपिंग्स भी डाल सकते हो लाइक शिमला मिर्च और मशरूम, इफ यू नॉन वेजिटेरियन चिकन ये सब डाल सकते हो। एक सॉस भी काफ़ी अच्छे से लगाई थी ना तो सही टेस्ट आ रहा है एंड बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बस थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है उसकी वजह से ही। एंड आजकल ये मैगी पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये सब होता है उसकी मैगी के ऊपर लगा के खाते हैं एंड यू गाइस विल नॉट। एंड आप यकीन नहीं मानोगे मेरी मम्मा ने मैगी बना रखी थी तो मेरे लिए वो बची है, सो लेट्स ट्राई दैट आल्सो। नहीं सो गाइस शी इज अवेक नाउ एंड अभी मैं ये वाला जो बचा था एक बाइट मैं मम्मा को खिलाती हूँ एंड लेट्स सी हर रिएक्शन। मम्मा ये देखो मैंने बनाया मग पिज़्ज़ा, खा के देखो लास्ट बाइट ही बची, आप सो रहे थे। बढ़िया अच्छा था। So guys now I am trying this, मैंने थोड़ा सा बचा लिया था इसके ऊपर रख के एंड आई ईट इट। मैगी ठंडी भी हो गई, लेट्स सी कैसा लगता है ये मैगी के साथ। बिकॉज ये गाइस फॉर बस एक और मेरा मन कर रहा था बनाने का, मुझे सब कुछ फ्राई करना पड़ेगा, क्या करना मन है बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस वन। So guys now we will try third recipe which is lava cake and lava cake so जिसके अंदर पानी नहीं आता, मेरी भी आ गया and डोमिनोज का lava cake तो awesome, तो अभी we will try that and वो भी how make करेगा मैं इसमें ले लिया that 3 tablespoon of मैदा and now you have to add 1 tablespoon of cocoa powder, of salt and you have to add 2 tablespoon of sugar, so just adding that and now you have to add 3 tablespoons of milk so this is how the consistency is looking, कुछ भी काफी अच्छी आ रही है। ऑयल डायरेक्ट ऐसे ऐड कर रही हूँ
एंड उसके बाद भी हैव टू ऐड वनीला एसेंस मग के अंदर ही, और मैं इसी से ही थोड़ा सा डायरेक्ट डाल लूँगी, ज़्यादा प्रो बन रही हूँ मैं लिखा हुआ ये तो नाव ज़्यादा छिपेंगे, बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी होगी इसकी ऑयल डालने के बाद। आई डोंट नो व्हाई but it smells really amazing guys. Now we have to add date milk like chocolate, so you chocolate डाल लो। So I am adding a half of this, okay, half से ज़्यादा, and बाकी क्या just take it. So guys, this is how it looks, and ये chocolate इसमें, हाँ इसके लिए chocolate आपको इसमें cover करनी है अच्छे से। Just put this in microwave, and हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, and तब तक के लिए मैं so now we're done. And this is how it looks like guys, बिल्कुल। So guys, now I'm going to try this lava cake, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, and काफ़ी स्पॉन्जी नहीं होगा, बिल्कुल वैसा होता है जैसे लावा केक की तरह अच्छा बना लावा केक है। So you guys, first of it, करना है। Yum. गर्म हो गया, गर्म भाभी में, but taste में guys I'll just finish it and like this video then please give it a thumbs up and comment करना आपको कौन सी अच्छी लगी रेसिपी देखने में खाने में, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट वाली तो बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बाकी पिज़्ज़ा वाज दी बेस्ट, एंड अगर मुझे इसको रेटिंग देनी हो तो आई गिव इट लाइक 6 आउट ऑफ 10, बट ब्राउनी को तो 0 माइनस में जाना चाहिए, बल्कि पता नहीं कैसी थी वो इतनी गंदी। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।